Hello, sparkling stars. A very warm welcome to your class 7th English class with your educator, Prajita. And children, today we are going to read chapter number 11. That is Love for Birds. बर्ड्स देखे हैं आपने, तरह तरह की अलग अलग सुंदर सुंदर तरीके की बर्ड्स होती हैं. तो उन बर्ड्स के लिए प्यार क्या है, किसके बारे में है, दैट वी विल read here in this lesson. Killing birds and animals for fun used to be a sport in olden days, but not today. बर्ड्स और एनिमल्स को मारना एक स्पोर्ट हुआ करता था, गेम की तरह लोग खेलते थे, उनको मारते थे, और वो पहले हुआ करता था ओल्डन डेज में, बट आज नहीं है. टुडे वी आर अवेयर ऑफ द नीड टू प्रिजर्व our bird and animal life because their numbers are dwindling because of deforestation. लेकिन आजकल हम सब ही अवेयर हैं इस बात से, हम सबको इस बात का ज्ञान है कि किस तरह से बर्ड्स और एनिमल्स के नंबर्स में डिक्रीज हो रहा है, कम होते जा रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज. सो सब इनको बचाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से बर्ड्स और एनिमल्स को सेव किया जा सके. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ काकू हेल्प्स धीरू टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेस्ट लाइफ. ये काकू और धीरू के बारे में है, जिसमें कि काकू ने किस तरह से धीरू की हेल्प की, उसका जो एटीट्यूड था फॉरेस्ट लाइफ के प्रति उसको चेंज किया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हियर. इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग. The sun was yet to rise. Sun नहीं निकला था, but Kaku was running along the forest path on his way to the grove of wild pear trees deep inside the forest. दिन अभी निकला नहीं था, सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन काकू जो था वो फॉरेस्ट की तरफ दौड़ा चला जा रहा था. कहाँ पे? ग्रूव ऑफ वाइल्ड पेयर ट्रीज जहाँ थे. The largest of these trees had a beehive clinging to one of the branches. और उसका जो सबसे बड़ा पेड़ था उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था. For 6 months the hive had hung there, and now at the start of winter it was full of rich golden honey. 6 महीने से वो छत्ता वहाँ पे जो बी हाइव था वो वहाँ लगा हुआ था, और अब जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला था तो उसके अंदर वो फुल ऑफ क्या था? हनी भरा हुआ था उसमें. Kaku's father planned to gather the honey that day, and Kaku was most excited. और काकू के फादर ने प्लान किया था कि इसमें से हनी निकालेंगे. There would be honey for the evening meal with hot, crisp rotis straight from the fire in the kitchen. Kaku was hurrying to make sure that the hive was still there and nobody else had brought it down. अब काकू को ये एक्साइटमेंट था कि हनी जब निकलेगा तो गरम गरम रोटी के साथ शाम को हनी खाने को मिलेगा, और वो इसलिए दौड़ के सबसे पहले वहाँ पहुँचा ये देखने के लिए कि किसी और ने उस बी हाइव को तोड़ा तो नहीं है. All at once Kaku was a wisp of blue behind some bushes in the distance. So he was not alone. Someone else was roaming around the forest too. अब काकू जब वहाँ पहुंचा फॉरेस्ट के अंदर, उसको लगा कि वहां पे कोई और भी है, केवल वही अकेला नहीं है. काकू ran faster. In a few minutes he had reached the grove of pear trees. The sun had risen, turning the sky to a soft pink dotted with puffs of cloud. अब वो और तेज दौड़ा जब उसको पता लगा कि वहाँ कोई और भी है, और वो ग्रोव ऑफ पेयर ट्रीज जहाँ पेयर ट्रीज लगे हुए थे वहाँ पे पहुँच गया. अब सन भी निकल चुका था. एंड द पेयर ट्रीज दे वर फुल ऑफ पैरट्स, स्लिम ब्राइट ग्रीन बर्ड्स विथ लॉन्ग टेल्स एंड शार्प रेड बीक्स. और वहाँ पेयर ट्रीज पे पैरट्स भरे हुए थे. देयर वर मेनी पैरट्स देयर. They were busy nibbling at the fruit, squawking, fluttering their wings and flying around the trees in little circles. और वो जो पेड़ ट्रीज थे, नाशपाती के जो पेड़ थे, वहाँ बहुत सारे पैरट्स थे जो कि बैठ के वो फ्रूट्स खा रहे थे. Suddenly something raced through the air.
Next minute, one of the parrots screamed and fell to the ground in a shower of emerald green feathers. अचानक से कोई चीज उड़ के आई and it was a parrot, जो कि क्या हुआ था उसके साथ, उस पैरट को, वो पैरट नेक्स्ट मिनट वो स्क्रीम किया उस पैरट ने और वो जमीन पे गिर गया. Screeching like mad, the rest of the parrots rose in a cloud and disappeared beyond the trees. Kaku stood rooted to the spot. Someone had shot at a parrot and killed it. But who? और वो आवाज जैसे ही वो स्क्रीम हुआ, बाकी सारे पैरट्स वहां से उड़ गए और वो पैरट जो था वो जमीन पे गिर गया. और काकू को इस बात का पता लगा कि किसी ने उस पैरट को मार गिराया है. He was still dazed when out of the bushes stepped a boy somewhat older than him, clad in a blue shirt and carrying a catapult in one hand. अब तभी एक लड़का बुशेस में से बाहर आया. वो काकू से थोड़ा सा ही बड़ा होगा और उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी. उसके हाथ में एक कैटपुल्ट था. कैटपुल्ट, यू नो व्हाट इज कैटपुल्ट? कैटपुल्ट गुलेल को बोलते हैं, जिससे कि जिसमें पत्थर लगा के मारा जाता है बर्ड्स को. काकू knew him at once. He was Dhiru, son of the forest ranger who had just come to stay at the local rest house. और काकू उसे देखते ही पहचान गया कि ये तो फॉरेस्ट रेंजर का बेटा धीरू है. काकू's father was the चौकीदार of the same rest house. और जिस रेस्ट हाउस में ये फॉरेस्ट रेंजर रुके थे, उसी रेस्ट हाउस के चौकीदार काकू के फादर थे. काकू marched up to Dhiru. Why did you hit that parrot? He demanded. अब उसने धीरू से पूछा, तुमने क्यों मारा इस पैरट को? To show that I'm a super marksman, came the reply. उसने बोला, मैंने ये दिखाने के लिए कि मैं एक सुपर मार्क्समैन हूँ, इसलिए मैंने इसको हिट किया. Kaku stood his ground. Couldn't you have shot a pair instead? He went on. काकू ने उसे कहा कि अगर तुम्हें यही दिखाना था कि तुम्हारा शॉट कितना अच्छा है, तो क्या तुम एक नाशपाती को हिट नहीं कर सकते थे? And who are you to tell me? Snorted Dhiru. धीरू ने बोला, तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? Aren't you the boy who lives in the outhouse behind the rest house? You should know that I am the son of forest ranger. ने बोला, तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? तुम तो वही हो ना जो रेस्ट हाउस के बाहर, वहां पे बिहाइंड द रेस्ट हाउस वहां रहते हो, आउट हाउस में. और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं. मैं फॉरेस्ट रेंजर का बेटा हूं. Never mind who you are, returned Kaku hotly. You have no right to kill birds. It's a mean, cruel, horrible thing to do. काकू ने कहा, तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बर्ड्स को मारना एक क्रुएलिटी है और एक बहुत हॉरिबल, बहुत गलत बात है. laughed Dhiru. I'll do exactly as I please. अब धीरू said, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है. And you had better keep out of my way. One word from me and your father loses his job. Keep out of my way, I say. He growled and marched off. उसने बोला कि मेरे से दूर रहो और मुझे कुछ भी मत बोलो, क्योंकि मैंने अगर एक वर्ड अपने फादर को जाके बोल दिया तो तुम्हारे फादर की जो जॉब है वो चली जाएगी. Kaku stood where he was with nothing more to say. He knew perfectly well that his father couldn't afford to lose this job. काकू को ये पता था कि उसके फादर की जॉब जाने से वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे. उसके फादर ये जॉब नहीं लूज कर सकते थे. There were 4 mouths to feed in the family and very little money coming in. और घर में 4 लोग थे जिनको कि फीड करना पड़ता था, उसके फादर को अर्न करना पड़ता था, और बहुत कम पैसा वो अर्न करते थे. No, there was no way out. None at all. He couldn't stop Dhiru hitting birds with his catapult. That night, as Kaku sat at the long-awaited meal of honey and rotis, his thoughts were elsewhere. अब शाम को जब वो हनी और रोटी खाने बैठा, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था. His little sister ate with gusto and there was enough for all of them. But what would happen if he picked another fight with Dhiru? He was just thinking कि अगर एक बार और धीरू से झगड़ा हुआ तो क्या होगा.
In the days that followed, Kaku was not a happy boy. Oh, he did his bit about the house as before. He fetched water from the spring down the hill. He collected dry twigs for the kitchen fire and swept the rest house clean. वो normally जैसा work करता था काकू, he was doing that only, but every morning he saw Dhiru leave the rest house, catapult in hand and a hungry look in his eyes, and the sight made Kaku miserable. डेली वो ये सब काम करते हुए धीरू को अपने हाथ में कैटपुल्ट लेके जाते हुए देखता था. Sometimes Kaku followed Dhiru at a distance, pretending to be looking for wild fruit and berries. कभी-कभी वो उसका पीछा भी करता था धीरू का. But in truth, he wished to keep an eye on Dhiru. Once when Dhiru took aim at a tree full of wood pigeons, Kaku sent a small pebble flying into the tree and all the pigeons made off to safety. अब एक दिन जब वो धीरू को फॉलो करके गया तो उसने देखा कि एक पेड़ पे बहुत सारे वुड पिजन्स बैठे हुए हैं और वहाँ धीरू ने एम किया है कैटपुल्ट से. उससे पहले ही उसने एक छोटा सा पेबल पत्थर लिया और उस ट्री की तरफ मारा तो सारे जो पिजन्स थे वो उड़ गए, सारे कबूतर उड़ गए वहाँ से. बट ही कुड नॉट डू इट टू ऑफन विदाउट बीइंग कॉट. लेकिन वो हर वक्त ऐसा नहीं कर सकता. So most of the time he hung around like a dumb thing while Dhiru fitted sharp stones to his catapult and brought down one bird after another. अब रोज तो वो नहीं बचा सकता था ऐसे birds को. The days flew by. Soon Dhiru's father had finished his work and it was time for father and son to leave. अब धीरू के फादर का जो वर्क था, फॉरेस्ट रेंजर थे, उनका जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया था और उन्हें अब यहाँ से जाना था. On the day before that, Kaku set out to pluck fresh walnuts from the trees in the forest. और उनके जाने से एक दिन पहले काकू कहाँ गया? Walnuts, fresh walnuts तोड़ने गया forest में. Bag on his shoulder, Kaku hunted around till he found a tree laden with walnuts. अब बहुत ढूंढने के बाद काकू को एक ट्री मिला वॉलनट का जिसमें कि बहुत सारे वॉलनट्स लगे हुए थे. He climbed the tree and plucked all the fruit within reach. He found more trees and bit by bit his bag filled up. और भी बहुत सारे ट्रीज उसको मिले और वहाँ जाके उसने धीरे धीरे अपने बैग को वॉलनट से फिल कर लिया. The afternoon was slowly turning into evening and the sun had begun to touch the crowns of the tallest trees. अब आफ्टरनून धीरे धीरे इवनिंग में टर्न हो गया. It was time to go back. Kaku slipped to the ground, dusted his clothes and set off homewards. अब काकू वापस अपने घर जाने लगा. Wouldn't his mother be happy to see his bag full of walnuts? Suddenly, as he turned around a clump of stinging nettles, Kaku heard an unfamiliar sound. अचानक उसे एक बड़ी अनफेमिलियर सी साउंड सुनाई दी, like someone moaning, like कोई दर्द से कर्रा रहा हो जैसे. He peered among the bushes and saw, huddled on the forest floor, the figure of a boy clad in blue. Kaku stopped dead. Now, काकू ने जैसे ही वो बुशेस के अंदर गया वहां उसने देखा कि फ्लोर पर, फॉरेस्ट के फ्लोर पर एक बॉय गिरा हुआ है. उसने ब्लू कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं. It was Dhiru. But what on earth was Dhiru doing there, all of a heap, head to the ground? Had he lost his way in the forest? Maybe he needed help. अब काकू ने सोचा ये धीरू यहाँ क्या कर रहा है? Kaku took a quick step towards Dhiru and then suddenly he remembered the hurt and pain of the past few days. Dhiru has given to the killing birds. He was heartless. A boy like him deserved no help. Kaku turned and made off among the trees on his way home. अब काकू जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा उसको अचानक से ध्यान आया कि इतने दिनों जो वो धीरू ने इन बर्ड्स को जो पेन दिया है, उनको मारा है, तो उसने कहा कि इस तरह का जो लड़का है इसको कोई ये डिजर्व नहीं करता किसी की भी हेल्प और मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा. वो वापस अपने घर के लिए मुड़ गया. But it was not long before Kaku stopped again. Something was troubling him. He looked up. The sky was turning grey.
अब काकू थोड़े दूर ही चला था, वो फिर से रुक गया। कुछ ऐसी चीज थी जो उसे ट्रबल कर रही थी। उसने देखा कि अब अंधेरा होने वाला है। Soon it would get dark and the jackals would be out, howling in the shadows. There may be a leopard out hunting too, and Dhiru would be alone, huddled up on the forest floor. अब उसने कहा कि थोड़ी देर बाद तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होते ही क्या होता है, जो जैकल्स हैं वो निकल आएंगे, और मे बी लेपर्ड हो सकता है कि लेपर्ड भी आ जाए, लेपर्ड निकल आए, चीता निकल आए हंटिंग पे, और वहाँ धीरू अकेला पड़ा हुआ है फॉरेस्ट फ्लोर पे। What had happened anyway? Was धीरू in pain? Why was he mourning? अब उसने सोचा कि धीरू ऐसे गिरा हुआ था वहाँ पे और वो दर्द से करहा रहा था, क्या उसको दर्द हो रहा था? काकू ran back, bent over Dhiru and shook him by the shoulder. Dhiru looked up. Oh, it hurts. He moaned, his face all twisted. अब काकू वापस दौड़ के गया धीरू के पास, उसको शोल्डर से उसने हिलाया, और धीरू ने जब उसको देखा उसने कहा बहुत दर्द हो रहा है। What is it? asked Kaku. What happened? Dhiru tried to steady his voice, but it shook with pain. I was reaching out for a bird's nest in a tree when I slipped and fell, and my ankle. Oh, it got twisted. Hurts real bad, and I lost my way too. धीरू ने, जब काकू ने पूछा कि क्या हुआ क्या है, तो धीरू ने कहा कि उसने अपनी वॉइस को स्टडी करते हुए कहा, बट उसको इतना पेन हो रहा था, उसने कहा कि मैं एक बर्ड के नेस्ट को तोड़ने के लिए ट्री पे चढ़ रहा था और मेरा पैर स्लिप किया, मैं नीचे गिर गया। My ankle twisted. Not to worry, said Kaku. Let's go back home. Can you walk? Wincing and with a great effort, Dhiru stood up and took a few shaky steps forward. Kaku took his arm and the two boys set off towards the rest house. काकू ने बोला कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्या तुम थोड़ा चल सकते हो? तो वो उठा। कौन उठा? धीरू उठा, और उसने धीरे धीरे लंगड़ाते हुए काकू ने उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों घर रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। Walk as fast as you can, said Kaku. We shouldn't be here after dark. Bit by bit they went on. काकू ने बोला कि थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। A little later, Kaku realized that Dhiru would not have eaten for some time. You must be hungry, he said. I have some walnuts here. He tapped his bag, but Dhiru simply shook his head and looked straight in front of him. He seemed unhappy, ill at ease. For a long time, the two boys walked in total silence. अब काकू ने जब उसको वॉलनट्स भी ऑफर किए तो उसने मना कर दिया, because he was in pain. Now and then Dhiru would moan and sit down on the ground, but Kaku helped him up. वो थोड़ा सा चलता था, फिर से बैठ जाता था धीरू, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। At length they came within sight of the rest house, and without a word, Dhiru stopped dead. What's happened? asked Kaku. Why have you stopped now? We are almost there. Are you too tired to go on? अब जैसे ही वो रेस्ट हाउस दिखने लगा, अचानक से धीरू रुक गया। तो काकू ने कहा, अब तो हम बिल्कुल पास आ गए हैं रेस्ट हाउस के, आप क्यों रुक रहे हो? तो क्या तुम थक गए हो बहुत ज्यादा? No, replied Dhiru. I just want to ask you, will you do something for me? Yes, said Kaku. What is it? Tell me. I shall be going away tomorrow morning, said Dhiru. But when you go into the forest, dig a deep hole and bury this. I won't be needing it anymore. He dug into his pocket and held out his catapult. Kaku stared, completely taken aback. अब धीरू ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं, मैं थका नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मेरा एक काम करोगे? तो काकू ने कहा, यस, बताओ क्या करना है। देन धीरू सेड कि कल मॉर्निंग में जा रहा हूँ, उससे पहले तुम तो फॉरेस्ट में जाते हो, वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदना, और मेरा ये जो कैटपुल्ट, उसने अपने पॉकेट से कैटपुल्ट निकाला, इसको
उसमें गड्ढे में दबा देना, क्योंकि मुझे अब ये नहीं चाहिए। काकू was very surprised. Then he understood and gave Dhiru a broad smile. Hand in hand, the two boys hurried on their way to the rest house. तो अब काकू को समझ में आया गया कि धीरू को ये समझ में आ गया था कि पेन क्या होता है, what is the pain, what he had been giving to those birds. उन बर्ड्स को भी ऐसे ही पेन होता होगा जैसे धीरू को हो रहा था। So now both of them were very happy. धीरू ने एक ब्रॉड से स्माइल दी और दोनों हाथ पकड़ के रेस्ट हाउस की तरफ चले। Now this story has been written by Pratibha Nath. So children, never give pain to anybody. किसी को आप दूसरों को पेन देते हैं तो जब आपको पेन होता है then you realize कि what is it, कि पेन में कैसा लगता है। Now word meanings. The word meanings, just read the word meanings here. Now we'll do some comprehension. Darken the correct option in OMR sheet. Every morning he saw Dhiru leave the rest house, catapult in hand and a hungry look in his eyes. Dhiru had a hunger for. Dhiru की आंखों में किस चीज का हंगर दिखता था? Wandering in the forest, collecting wild fruits and honey, killing the birds, collecting the wood. His hunger was killing the birds. When Kaku offered walnuts to Dhiru, he simply shook his head and looked straight in front of him because he was not hungry and didn't want walnuts, felt uneasy about the help from Kaku after his behavior, was hurt and his ankle pained badly, was annoyed with Kaku. Option B is the correct one, क्योंकि वो अनईजी फील कर रहा था धीरू कि उसने इस तरह का बिहेवियर किया, फिर भी काकू ने उसकी हेल्प की। धीरू asked Kaku to bury his catapult. What was the actual reason? He was going back to the town. The catapult was broken and useless. He had realized his cruelty towards birds. He did not like the catapult. Option C is the correct one. उसको रियलाइज हो गया था अपनी क्रूएलिटी, जो उसने क्रूएलिटी बर्ड्स के प्रति दिखाई थी, उस चीज को उसने रियलाइज कर लिया था and he wanted to bury his catapult. Now children, fill in the blanks. Some words are given here. Let's read them first. Walnuts, wild, shaky, kitchen. The beehive was in the grove of dash pear trees. Wild pear trees. The beehive was in the grove of wild pear trees. Kaku collected dry twigs. It is dry twigs. Kaku collected dry twigs for the dash fire, for the kitchen fire. So write down kitchen here. Kaku went to pluck dash from the trees in the forest. Kaku went to pluck walnuts from the trees. वो walnuts तोड़ने गया था. Dhiru stood up and took a few dash steps. कैसे steps लिए उसने उठने के बाद? Few shaky steps. S-H-A-K-Y. Next is, say if the given statements are true, T, or false, F. Kaku lived in the rest house. Yes, this is true. The beehive was on walnut tree. No, this is false. कहाँ था वो? It was in the grove of pear tree. Dhiru was the son of forest ranger. Yes, this is true. T. Kaku gathered walnuts in the bag. True. Answer the following questions. Why was Kaku in a hurry to reach the pear grove? Kaku was in a hurry to reach the pear grove because he knew that there on one of the largest pear tree, there was a beehive, and on that day his father was about to take out the honey from the beehive. He just wanted to go and see whether any other person has not broken that beehive. Why did Dhiru hit the parrot? What did Kaku tell him?
Dhiru hit the parrot with his catapult because he wanted to show everyone that how good he is in hitting. And Kaku then told him that why are you hitting these birds? If you want to hit, if you want to show that you are a super hitter, then you can hit the fruits also. What did Kaku see while coming back from the forest after gathering walnuts? While coming back from the forest after gathering the walnuts, Kaku saw that in the bushes, near the bushes, inside the bushes, a boy who was Dhiru, he was lying down on the forest ground and he was mourning. Describe the course Kaku performed in his house and the rest house. Kaku in the morning went down the hill to fetch water from the spring, and then he collected some dried twigs for the kitchen fire and he cleaned the whole rest house. What happened to Dhiru? How did Kaku help him? Dhiru was trying to take the bird's nest from the tree, and he was climbing the tree to take the bird's nest, and suddenly his feet slipped and he came down the tree and got hurt. He was lying on the forest ground. When Kaku saw this, he came to him and he shook his shoulders. First he turned back because he was very much angry with Dhiru's behavior towards the birds. He went away. Once he went away, but again he came back to help Dhiru, and he then picked him up and took him along with him to the rest house. Now children, we'll do some vocabulary here. Words related to bird sounds. Screeching like mad, the rest of the parrots rose in a cloud. The screeching. The word screeching refers to the cry parrots made. Okay, जब बहुत सारे parrots एक साथ आवाज करते हैं तो उस साउंड को कहते हैं screeching. Squawking is another sound that parrots make when they are happy. जब parrots बहुत खुश होते हैं तो जब वो sound निकालते हैं एक साथ, that is known as squawking. Below are given some sounds related to different birds. Match them with the birds. अब देखिए, ये cackle sound कौन करता है? The hens, they made a cackle sound. Caw is the sound of crow. Hoot, owl. Hoo or hoot is the sound made by owl. Coo, the dove. The dove makes the sound coo. Quack, duck. And chirp, sparrow. Now let's move further. Eating words. What are these eating words? क्या है ये? They were busy nibbling at the fruit. Notice that nibbling describes a way of eating. Eating का एक तरीका है nibbling. When one takes tiny bites of something as birds do, it is called nibbling. कहते हैं ना कुतर कुतर के खाना. That's taking small bites. That is known as nibbling. उसे कहते हैं nibbling. The following words also describe a way of eating something. Discuss them with your partner and identify the manner of eating they describe. Now, you can consult a dictionary also. अब ये कुछ words हैं जो कि क्या show करते हैं? एक manner of eating ही show करते हैं. Like bite, gnaw, nip, peck, graze. Cattle they graze grass. Chew. Okay? ये सब खाने के तरीके हैं. Swallow, munch, gobble, gorge. Apt expressions. Authors often use words or expressions to make their descriptions vivid and picture-like. अब जो authors होते हैं जब वो लिखते हैं तो कुछ expressions को अपने expressions को descriptions या vivid description या picture-like बनाने के लिए वो कुछ expressions का use करते हैं. They almost draw a picture with their words. उनके words से ही एक picture we can visualize a picture. Here is an example. The sun had risen, turning the sky to a soft pink dotted with puffs of clouds. अब इससे आप visualize कर सकते हैं ना कि जो cloud है वो किस तरह का हो गया होगा.
The underlined words are almost like word pictures. So now children, work with your partner and pick out from the text more apt expressions. अभी ऐसे expressions जो हैं वो हमने जो chapter पढ़ा है उसमें और भी हैं, बहुत सारे हैं. The clues have been given below for your help. कुछ clues दिए गए हैं. In a shower of emerald. In a shower of emerald. अब इससे आपको समझ में आ रहा है ना, एक पिक्चर आ गया कि in the shower of emerald. Emerald का shower. Rest of the parrots rose in a cloud. So there are more apt expressions. Read the chapter again and fill these apt expressions here. Now we come to grammar section, children. Present perfect continuous. Today we'll read about present perfect continuous tense. क्या होता है? Since, for. Kaku has been feeling unhappy since Dhiru shot down the parrot. Dhiru has been killing birds with his catapult for a long time. अब देखिए ये जो words आपको colored में दिए गए हैं, we'll just read about these words. We use the present perfect continuous tense to express an activity that started in the past and has been in progress till the moment of speaking. ऐसी एक एक्टिविटी शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और कब तक चला वो, जब तक कि हम अभी वो बोला जा रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो अभी हम बोल रहे हैं उस टाइम तक वो वर्क चला. Since and for are also often used with this tense. इस tense के साथ since या for का use भी किया जाता है. Since suggests the starting point of the activity. For suggests the period for which the activity has been in progress. देखिए, काकू has been feeling unhappy. Past में वो unhappy feel कर रहा था. कब तक? Since धीरू shot down the parrot. कब feel कर रहा था वो? जब starting point. कब से उसने feel करना शुरू किया unhappy? जब से धीरू ने उस parrot को मारा. Okay? Now complete these sentences by using the present perfect continuous tense of the verbs given in the brackets and writing since or for where necessary. She got admission to the school in 2015 dash then she dashed to get a hostel seat. Try. She got admission to the school in 2015. Since then, she has been और verb क्या दिया हुआ है? Trying. तो इसका हो जाएगा trying. ing. Okay, we use ing here. So she got admission in the school in 2015. Since then, she has been trying to get a hostel seat. Father dash this poultry business dash the last 15 years run. Father has been running. Father has been running the poultry business for the last 15 years. For the last 15 years. Who dashed roses from my garden? The giant asked furiously. Steal. Who has been stealing? Who has been stealing? क्योंकि verb क्या है? Steal दिया गया है. So who has been stealing roses from my garden? Next is ever dash the onset of the monsoons. All trains on this route dash late. The verb is run. Ever since the onset of the monsoons. Ever since the onset of the monsoons, all trains on this route have been running late. Have been running late. Okay? I dash here, dash at last half an hour, but no auto rickshaw has been in sight. Wait. I have been waiting. I have been waiting here for at last half an hour. For at least half an hour.
Okay, now the degrees of comparison. So you must have read the degrees of comparison previously also. There are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Kaku sent a small pebble flying into the tree. Small is the positive degree. Okay? Kaku ran faster and soon reached the grove of pear trees. This is comparative. Kaku ran faster. Dhiru fitted the sharpest stone to his catapult. Sharpest is the superlative degree. Sharp, sharper, sharpest. Fine? Fill in the blanks with the correct degree of the adjectives given in the brackets. Penguins have very dash wings. Very, कैसे wings होते हैं? Very short wings. Short का short ही आएगा क्योंकि positive degree आएगा. Apples contain some of the dash minerals. Important. Apples contain some of the most important minerals. Most important minerals. Fine. Superlative degree. Most important. It is dash to take part in games than to win. It is more important to take part in the games. More important. Fine, children. So now rest of these you have to fill in yourself because आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये डिग्रीज क्या होते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री जब आप सिंपल एक सेंटेंस बोल रहे हैं about anything, then comparative degree, दो चीजों में comparison जब होता है, and superlative is more than, comparison between more than 2 things. Okay? Now, prepositions. Fill in the blanks with appropriate prepositions. Dhiru was the son of the forest ranger. Of the forest ranger. He loved to shoot at the birds with his catapult. When Kaku scolded him for his cruel acts, he threatened Kaku. Kaku felt miserable as he couldn't stop Dhiru for hitting the birds. One day Kaku heard someone moaning in the forest. He found Dhiru on the forest floor, groaning in pain. He bent at Dhiru and shook him with his shoulder. Then he helped Dhiru to get up and slowly walked him to the rest house. Fine, children? Now, writing skills. Imagine you are Kaku. आप imagine कीजिए कि आप काकू हैं. Write a diary entry what happened on the day when you were collecting walnuts and how you helped Dhiru. आपने उस दिन का इमेजिन कीजिए कि जिस दिन आप एक डायरी एंट्री लिखनी है आपको कि आप वॉलनट्स कलेक्ट करने गए थे और उस दिन आपने धीरू को कैसे देखा, किस कंडीशन में देखा और फिर आपने कैसे हेल्प की धीरू की. एंड इमेजिन यू आर धीरू. राइट अ लेटर टू काकू थैंकिंग हिम फॉर हिज हेल्प. ऑल्सो मेंशन हाउ यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ. अब आप इमेजिन कीजिए कि आप धीरू हैं. जैसे धीरू में वो चेंज आया, उसने अपने कैटपुल्ट को बरी करने के लिए कह दिया काकू को. तो एक लेटर लिखिए काकू को थैंक्स गिविंग का, कि उसको थैंक्स बोलिए कि कैसे उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और कैसे वो अब आज चेंज्ड पर्सन है. वैल्यूज. धीरू इज अ मीन arrogant boy in the beginning of the story. Discuss how and why he undergoes a transformation at the end. कैसे उसमें चेंज आया, क्या इंसिडेंट हुआ जिससे कि उसमें वो चेंज आया. He totally changed himself. So children, here we end up with the lesson and please go through the lesson again. फिर से पढ़िएगा इस lesson को and stay tuned for the new video. I'll be back with a new chapter for you. Till then, keep learning. Stay blessed. Bye.